अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब मैं एयरपोर्ट मराकश पे पहुंच गया हूं। वापसी ही है आज, और मैंने कहा आपको दिखाते जाएं कि जनाब इतना कोई रश नहीं। अभी मैं बाहर ही हूं। ये एयरपोर्ट आप बाहर से देख सकते हैं, डिपार्चर ना। ये मैंने कहा आपको दिखाता जाऊं। और ये जनाब पीछे आप देख रहे हैं अराइवल, ठीक है। अभी देखते हैं, थोड़ा मैं जल्दी आ गया हूँ। बोर्डिंग कार्ड लेते हैं, फिर आपसे बातचीत चलती रहेगी। जी नाज़रीन, अच्छा ये मैं अंदर आ गया हूँ। अभी थोड़ा टाइम है, मैं पहले पहुँच गया हूँ। मैंने कहा आपको दिखा देते हैं, एयरपोर्ट का अंदर वाला हिस्सा है। और अभी बोर्डिंग कार्ड मेरा कोई 20-30 मिनट तक शुरू होगा, फिर आपसे और भी बातचीत है। ये एयरपोर्ट है, और यहाँ पे पाकिस्तान की तरह जब आपने अंदर आना है तो सामान लेके आना है, सामान चेक करना है। वहाँ पे गेट से दाखिल होते तमाम लोगों की चेकिंग होती है। जुड़े रहे मेरे साथ। जी नाज़रीन, अभी थोड़ी देर तक बोर्डिंग शुरू हो रही है, उसके बाद जनाब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जी नाज़रीन, अपना सामान बुक करवा दिया। अब डिपार्चर वहाँ पे इमिग्रेशन चेक होगी, क्योंकि यूरोप में तो और तरीक़ाकार है। यहाँ पे ज़रा मेरा ख़्याल है चेंज होगा। देखते हैं अभी और आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा ये है कि यहाँ पे वो पाकिस्तान वाला सिस्टम है कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। काफ़ी टाइम इमिग्रेशन लगाती है यहाँ पे, यूरोप की तरह नहीं है। जिनके पास ज़ाहिर है यूरोपियन पासपोर्ट हैं, वो तो वहाँ गुजर जाते हैं, मगर जो आम पब्लिक होती है उनके लिए वहाँ भी वक्त लगता है। वो भी ज़ाहिर है चेक करते हैं। तो पुलिस वाला अच्छा था, यहाँ इमिग्रेशन में पुलिस वाले ही बैठे हुए हैं, और वो काफ़ी उससे गपशप भी हुई। और मेरा ख़्याल है कि अच्छे लोग हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं हमें, क्योंकि आदत नहीं है इंतज़ार की, थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर वाला हिस्सा एयरपोर्ट का। और ये जनाब ड्यूटी फ्री शॉप है यहाँ पे, ये भी आपको दिखा देते हैं परफ्यूम वगैरह, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं खुशबू की, वैसे ही बहुत खुशबू आती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत होती है। ये जनाब, और लोग यहाँ से सिगरेट वगैरह भी लेते हैं, मगर मैं क्योंकि पीता ही नहीं हूँ तो मैंने लिए भी नहीं, इसीलिए। छोटा सा एयरपोर्ट है, माला ज़ारा, हिथरो, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट तो बहुत बड़े हैं। अच्छा ये ऑयल यहाँ पे बहुत बिकता है, ये वाला, और ये लोग ख़रीदते हैं, मगर मेरा ख़्याल है कि काफ़ी प्राइस इसकी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो जब भी आएँ तो सिटी में जाएं, वहाँ पे मिल जाता है आम। अच्छा यहाँ पे बोर्डिंग कार्ड पे भी स्टैंप लगाते हैं, और पाकिस्तान में भी लगाते हैं। ये यूरोप वगैरह में नहीं है, अमेरिका वगैरह में नहीं है, कनाडा में भी नहीं है, मगर यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सेम ही सिस्टम है। तो मैंने कहा आपको बताता जाऊँ। ये जनाब सब ड्यूटी फ्री शॉप है। अभी वेटिंग रूम में इंतज़ार भी होगा, वहाँ पे आज हालात हाज़रा पे बातचीत भी करेंगे, मगर वो एक अलग प्रोग्राम होगा हमारा। ये मराकश का जो एयरपोर्ट है उसकी यहाँ डिपार्चर है, वो वाला हिस्सा। ये कॉफ़ी शॉप वगैरह। अच्छा यहाँ पे कॉफ़ी का बड़ा है, वो पुदीने वाली चाय पिलाते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी पिए और जिए।
ये जनाब आपको मैंने दिखा दिया। ये देख, ये अच्छा बनाया हुआ है, खूबसूरत सा। आपने जाना नहीं कहीं पे तो जनाब ये आपको यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, चलते यहाँ दिरहम है मगर प्राइस एरो में लिखी हुई यूरो में। तो अगर आप को बड़ा नोट देंगे तो बकाया जो है वो दिरहम में मिलेगा। मैंने कहा आपको बता दो, ये मराकश एयरपोर्ट। अच्छा, प्राइस यहाँ पे यूरो में लिखी हुई है। मार्केट में भी आए ना, ड्यूटी फ्री शॉप पे भी, वहाँ पे भी यूरो में ही लिखी हुई है, एरो में। ये सिगरेट जो लोग पीते हैं उनको मैं दिखाऊं जनाब। और यहाँ पे सस्ती है, 34 यूरो में आपको मिलेगा ये पूरा सिगरेट का पैकेट। मैं तो पीता नहीं मगर एक ही लेके जा सकते, दूसरा अगर आपने लिया तो पकड़ेंगे तो एक और नया स्यापा। जब प्राइस यहाँ मैंने आपको बताया यूरोप से कुछ ज़्यादा ही है। यूरोप एयरपोर्ट में जो है वो कम है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। मैंने चेक की है ताकि आपके इल्म में रहे। महाराज जी, बहुत ज़बरदस्त ये मुल्क है मौसम के हिसाब से, और भी काफ़ी यहाँ फ़ायदे हैं। कभी आपको टाइम मिले तो यहाँ हॉलीडे पे आएँ। अच्छा जी, अब प्लेन में जा रहे हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है लेट है ये ब्रिटिश एयरवेज, देखते हैं कितना लेट है। अच्छा जी, ये तो हो गया सब कुछ। अब चलते हैं प्लेन में, और मेरा ख़्याल है 10-20 मिनट लेट है प्लेन, मगर कोई नहीं, इतना तो चल जाता है। ये जनाब बाहर का भी आपको थोड़ा नज़ारा करा दें। ये मराकश से लंदन फिर बोर्डिंग। ये लग रहा है कि फुल है प्लेन। अभी देखते हैं। ये तकरीबन 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे। आती दफ़ा 3.5 घंटे, जाती दफ़ा 15 मिनट ज़्यादा। बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है सिस्टम प्लेन में जाने का। या प्लेन में चलते हैं या फिर देखते हैं। Smoking devices is not permitted at any time while on board. These secure toilets which are fitted with smoke detectors. अच्छा जनाब, ये सीट है अपनी। अच्छा जनाब, प्लेन में तो मैं बैठ गया हूँ, अभी लोग आ रहे हैं। ये जनाब मैं कोई मराकश में रहा हूँ 27 दिन, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था, गर्मी थी, इंग्लैंड में बड़ी ठंड थी। तो 27 दिन बाद ब्रिटिश एयरवेज के ज़रिए आज वापस जा रहा हूँ। देखते हैं हिथरो पे क्या है, कह रहे हैं कि हड़ताल हुई है। मुझे ईमेल आई थी, अभी देखते हैं। Crew welcome board is British Airways flight to London Heathrow Terminal 5. To help us depart on time, please place all large hand baggage and spread position and location and operation of the doors. In the event of an emergency, no-limit lighting will guide you to an exit. Please ensure your seatbelt is fastened. It must be worn whenever the signs are on. Oxygen will be provided. Oxygen mask like this will appear automatically underneath or beside your seat. If required.
Very warm welcome to London Heathrow Terminal 5. The local time here is just approaching 2:45 in the afternoon. Please do remain seated with your seatbelt securely fastened until the fasten seatbelt signs have been switched off. When it's safe to do so, please do take care when opening the overhead lockers, as items may have moved and could fall out, causing injury. You may now make and receive calls as well as use all data services on your handheld electronic devices. If your journey ends here at Heathrow, please follow the yellow signs for arrivals. If you are connecting onto another flight from Heathrow today, please check the information screens for your departing gate number if it is not yet displayed signs for flight connections. I'd like to thank you for choosing to fly with us today. It has been a great pleasure having you all on board, and we do wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you and a very good afternoon. Please remain seated. The seatbelt sign is still switched on. Thank you. Please remain seated once again. Once again, please remain seated until the seatbelt sign has been switched off. Thank you.
Well then folks, that's the final word for the point of the aeroplane, and welcome to Heathrow. Right, well first of all, delighted to say that we are still, what, 25 minutes early, which is good. Because we're not parked on the main terminal, we're parked on a, what's known as a remote stand, so very close to the main terminal. You'll be disembarking through the forward left-hand door as usual, but you'll disembark down some steps onto some buses. The good news is the steps are here. The bad news is the buses aren't. The bad news. First one just around this period. It's a bit of a stop-start process. It takes a few minutes disembarking this way. We can only let so many off the aeroplane in one go, but we have to stop you and then wait for the next bus to pull up. Having said that, you do end up going to exactly where you want to be. The buses will take you to Terminal 5A, and then it's just a very short journey up the escalator to passport control and baggage reclaim on your way. I've lost the ability to speak now. Wherever you're heading off to this afternoon, have a safe onward journey. It's Christmas Eve, so a very Merry Christmas to you all, and Flybridge Airways today. Thank you. Make you feel like you can make the connection, but then they just bash the whole last minute. As you do leave us today, we are obviously disembarking you down some stairs and onto the buses. Please do use the handrails provided on the stairs, and please do take care as you leave the aircraft. Thank you. I'm hoping to make it. Now they just have to do VOA. जहाज से पहुंच गया जहाज से देखी है बड़ा किया तो है प्रोग्राम आज जो है उसमें किया
Sorry folks, it appears that the bus is